Okay. So last time we were discussing projectile motion. Remember that for projectile motion, you are dealing with objects essentially that are thrown or shot near the surface of the earth, so that the acceleration that they experience is constant. Okay, so we looked at some various scenarios regarding projectile motion. Today I would like to continue the theme, and essentially I would like to discuss 3 problems related to projectile motion. Okay, so projectile shot from cliff, that you are standing on the edge of a cliff and you throw something, hopefully not yourself. Number 2 being the monkey hunter problem. Okay, and along the way we'll learn an approach how to attack these problems. So that's what I refer to as the third problem. Okay, so I'll focus on actually solving these 2 problems. Bad job, bhai. Okay, so you have essentially a projectile that you are shooting from the edge of a cliff. So you have a cliff, you stand over here, you shoot the projectile with some speed u. This projectile is making an angle theta initially with the horizontal. Okay, so you have your projectile that you shoot with some speed u, and it makes an angle, the initial velocity makes an angle theta with the horizontal. Again, the first thing that you do is to choose the origin of your coordinate system. You can choose your origin at the location from where you shoot the projectile. Another almost equally suitable choice would be over here. Okay, so suppose the advantage of using this choice is that yes, the initial position vector of the projectile is not 0, but the condition that the projectile flies through the air in a parabolic trajectory. Remember, we are ignoring a resistance, so we know that the projectile will follow a parabolic trajectory. We saw that previously. It hits the base of the cliff. The mathematical description of the base of the cliff with this coordinate system is very straightforward. What's the mathematical description of the base of the cliff? Y is equal to 0. The y component of the position vector of any point at the base of the cliff should be 0. Okay. If you place the origin over here, the initial position vector of the projectile is the 0 vector, of course. But the description of the base of the cliff is slightly more complicated. In that case, if I place the origin over here, what do I get? What's the mathematical description of the base of the cliff? Is equal to y is equal to minus h. That's your base of the cliff, where h is the height of the cliff. Just for variety's sake, okay, because mostly I've been using coordinate systems where the origin is at the location where you shoot the projectile. Let's solve this problem with this coordinate system. Okay, and let me choose a different color over here so that okay, h. Okay, so let me place it over here for the third time. Okay, so you have okay, so I'll be using not this coordinate system, rather I'll be using that coordinate system. Oh, ulta kar diya hai. So you have this that you shoot from here, and this is the coordinate system that I use. Okay, this is the x-axis, this is the y-axis. Okay, what's the initial position vector of my projectile? That's simply h-ey. Again, I could have chosen the origin somewhere over here, but then I would be getting this extra horizontal distance that doesn't really give me much. Okay, so this is a simple choice because this point is directly below
the location for where I shoot the projectile. Okay, what's the initial velocity vector with this coordinate system? U cos theta, as in what two arrows do I add to get this arrow? That's the question I'm asking. There's this arrow and then there's this arrow. These two arrows add up to give me this arrow, the initial velocity vector. This arrow is of length u cos theta. This arrow is of length u sin theta. This arrow is pointing in the ex direction. It doesn't matter whether the tail of your vector is at the origin or not. You just always look at in which direction is ex pointing, in which direction is ey pointing. So this arrow is pointing in the ex direction, this arrow is pointing in the ey direction. This white arrow is the sum of these two arrows. This arrow is of size u cos theta, this arrow is of size u sin theta, and therefore putting it all together, I have that u is equal to u cos theta ex plus u sin theta ey. What's the acceleration vector? At every point, the acceleration vector is always pointing vertically downwards. It is always of size g. So what do I write down? Minus g ey at every point along its trajectory, as long as, of course, it's up in the air. As soon as it hits the base of the cliff, the statement that the acceleration is minus g ey is no longer true. Okay, so then I need to figure out from these vectors that I figured out, I need to figure out a recipe that allows me to calculate the position vector of the projectile at time t, at any arbitrary time t. When did you start your clock? What refers to t is equal to 0? T is equal to 0 is the time just after you shoot the projectile, just after you throw the rock, for example. Or just after you, if you don't like one of your friends, or just after you threw him off the cliff, okay? Okay, anyway. So you have r of t equals, this is constant acceleration. Make sure that you apply r naught plus ut plus half at square to a case where the acceleration is constant. Make sure of that, okay? So this is equal to r naught plus ut plus half at square. Where does this come from? From the very definition of the acceleration. The acceleration is a derivative of the velocity. If the acceleration is constant, then velocity is equal to u plus at. If the velocity is increasing linearly, then that's how the position vector is changing. If velocity increases linearly because the velocity is the derivative of the position vector must be changing quadratically with time. Okay? If you integrate it twice, that's what you get. Okay? If you have a straight line, just think about it in one day. You have a straight line, you integrate it once, you have a horizontal straight line, you integrate it once, you get a straight line with non-zero gradient. You integrate it again, you get a parabola. That's what this t square represents. It's quadratic in time. Okay, now it's just a matter of plugging it in. ये तो आपका ये simple सा जो आपका favorite होता है, okay? Given, list कर दो values and then just formula and then you plug it in, okay? You just plug it in. So you have r, t. These simple formula, these simple mathematical exercises go by the name for in जो physics education, essentially they are known as plug and chug questions that you have essentially have to search for an equation जिसमें numbers घुसाओ और बाहर answer आ जाए. Essentially in A levels, those are the type of questions that you kept on doing, plug and chug questions. Okay, but you have to go one step beyond that now. Okay, that's the biggest problem for you. Okay, so anyway, so r of t equals r naught, बस plug in कर दो, h e y. Don't try to do too many things at one time, especially when you are starting out with using vectors. Just write them down. Don't be lazy over here. And then simplify. Okay, plus ut. Well, you just have to write down u cos theta times t ex plus you have u sin theta times t
Ey. That's the result of this thing. You have a vector multiplied by a number, by a scalar. That gives you another vector that you just give you a scaled version of this vector, scaled by a factor of time. That's exactly what I have over here. Plus half AT square. So I just plug in A over here and I have plus half and I have A minus GEY and then of course I have T square. This of course I can just write as minus half GT square EY. And then you just group together terms that contain EX, you group together terms that contain EY. Right? So when you group together terms that contain EX, what do you get? You get essentially U cos theta times T EX. That's it. Plus, then you group together terms that contain EY. You have H plus U sin theta times T minus half GT square EY. This vector tells me everything about the projectile. I don't need to worry about, well, is the projectile going up? Is it coming down? It's all there. It's all there built into this mathematical object. And it's your job, of course, to learn how to extract physical information from this mathematical object. Okay, of course, this mathematical object is true provided that you set up the origin at the base of the cliff. Okay, if you set up your origin somewhere else, you get something slightly different. Anyway, so now you are looking at, you have to find out. Okay, so here's the problem that you are facing. You have to find out, let me just sketch it again over here. You have this cliff, you are shooting your projectile with some speed u and some angle theta. You have to find out the value of theta such that the projectile, it goes, flies through the air, it hits some horizontal distance r away. You have to find out the value of theta such that r is maximum. That's the problem. Oh, this part, okay, almost everybody of you should reach, every one of you, because this is by and large essentially standard projectile motion. This is something that you do over and over again when you are dealing with projectile motion. It won't be 45 degrees, precisely because you are not shooting from flat ground. Okay. So now, if I had shot it from flat ground, I know कि graph मेरा इस किस्म का बनता है. If I shoot it from flat ground, where there is no cliff, as in h is equal to 0. Why? I can argue physically, if I shoot it with an angle of 0 degrees, I am giving the projectile a large horizontal speed, but I am not really giving it any time to fly through the air. Because I am making such a flat throw, essentially the projectile immediately hits the ground. Remember, I am ignoring my own height. So I am basically throwing pretty much at ground level. If I am throwing it at an angle of 90 degrees, the opposite is happening. I am giving a lot of time for the projectile to fly through the air, but I am not giving it any horizontal speed or any horizontal velocity. So it doesn't go any distance forward. These are two competing factors. You make the time of flight too small, it doesn't really cover any horizontal distance. You make the horizontal velocity too small, it doesn't cover any horizontal distance. As you increase theta from 0, one goes down, the other goes up. That's why you're observing this shape. The optimal angle for on flat ground, of course, is right in between. That's usually what you expect. If you knew nothing else about this function r, a pretty safe guess would be that it's the average of these two values. That's the best I could do without bothering to derive a detailed expression for capital R. Okay, so you say, and it turns out in this case, of course, that this is the correct answer. Okay,
Now, you are throwing from a cliff. So if you are making a throw from here, if you shoot the projectile with angle theta equals 0, do you get a 0 value of capital R or non-zero value of capital R? Now you get something non-zero. So your graph for when you throw it from a cliff starts somewhere over here. If you throw it now at an angle of 90 degrees, what is capital R? 0. So your graph again comes over here. So you note these 2 points over here. And you can just say that probably the shape of the graph will be quite similar. So your shape of your graph will be, I can just extrapolate this over here. Of course, this is not physical. This is just mathematical. You're not throwing it backward. Okay, so you have essentially something like this. Just to maintain the symmetrical shape. Just to maintain the same shape, you basically can see that just from this, that the optimum point for throwing it from a cliff, the angle is probably smaller compared to 45 degrees. The whole thing has essentially been shifted to the left. Of course, I don't know that for sure. I'm just making guesses right now because I haven't derived a detailed expression for capital R yet. I can exactly work out how does capital R depend on theta. But that's my intuition. That would be my guess based on that, okay, now since the graph has a non-zero intercept, it's seen, and the shape of the graph should be pretty much similar. It seems that the whole graph is roughly shifted to the left. And therefore, the maximum point should be smaller than 45 degrees. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, okay. But as a first guess, it's a start, okay. Right? And another way to see that would be that, okay, you are essentially, when you throw it an angle of 0 degrees, it covers some distance. As you increase it towards 90 degrees, it comes back down to 0. So that means as you increase the angle initially, make it slightly non-zero, it probably increases. And then eventually it comes back down. So that's why there must be a maximum point. Okay, so much for that. Let's work it out. How in the world do you use this to figure out capital R? You basically say, okay, what is capital R? Capital R, you are essentially, what point of the motion are you talking about? Talking about essentially the point of impact. You're talking about the instant of time when the projectile is about to hit the base of the cliff. And what's so special about that point? At that point, the position vector of the projectile has y coordinate equal to y component equal to 0. That's the way I've set up my coordinate system. Okay, so I'm talking about this thing, that u sine theta times t minus half gt square equals 0. And this is not just any time now. This is which time? This is the time of flight essentially, the time for which the projectile was up in the air. So let's just call it capital T so that you don't confuse this time with any arbitrary time. So this equation allows you to find capital T. This is a simple quadratic equation for capital T. But hang on, if you solve a quadratic equation, you get two solutions. Which solution do I choose? Yeah, but why? Yeah, because essentially you started your clock and you're also always going to look at what happens in the future, what happens after I throw the projectile. The other solution refers to the past. That is, if one of your friend had actually dug a hole within the cliff and that shot the projectile over from here, such that it is over here at the instant when you started your clock, that's what the second solution is telling you about. It's telling you about a non-existent past. But the mathematics doesn't care about that non-existent past. उसके अंदर वो physical input नहीं गया. Yes? Yeah, the way that you have set up your coordinate system. नहीं, उस पर velocity 0 होगी, velocity का y component 0 होगा.
At that point, at the highest point, the y component of the velocity vector will be 0. It's 0 because at the top point, the object is only traveling horizontally. Remember, the velocity vector always tells you the direction in which the object is moving. At the top point, the object is only moving horizontally. So the y component of the velocity vector is 0. EY 0 नहीं किया. The y component को मैंने 0 किया. Yeah. Okay. So this thing in the square brackets, I've set that equal to 0. So okay. So this thing, if I put in capital T over here, capital T over here, position vector मुझे पता है कि क्या होना चाहिए. The position vector of the projectile at time capital T should be what? Rex minus plus 0 Ey. That's my position vector. When it is about to hit the ground, this is where the projectile is. What is the position vector? Yeah. This is the position vector of the projectile when it's about to hit the ground. And this position vector is simply Rex. And that at time capital T should be exactly the same position vector. Okay, right. So you can solve this for capital T. And then how does that allow us to find capital R? You just plug it in over here. This gives you the horizontal distance that the projectile has covered in time capital T. So you have R is equal to u cos theta times capital T. Okay. ये पहले आप quadratic question solve करोगे, इससे कुछ square root वगैरह आएंगे, plug it in over here, so you get something, not that nice looking. I wouldn't call it horrible looking, but it's not very nice either. उसके बाद क्या करोगे? You then calculate a derivative. Why do you want to calculate a derivative? Derivative with respect to what? Derivative of R with respect to theta. Why are you interested in that? Because you want to find out this point essentially. At this point, the rate of change of R versus theta is 0. So you then, whatever R you get from here, you want to differentiate it with respect to theta, set that equal to 0, solve for theta, and now it's your time to shine. Because you have to use a whole lot of trigonometric identities to simplify. And at the end of the day, you get a pretty simple answer. The final answer is not that important. I'll write it down very soon. But that's how you'll do it. Okay, again, it's the basic idea what you need to do that's really important, not the mathematical details. So at maximum point पे R की Ex की value, Ey की value. Yes. लेकिन ये maximum point उसके path का नहीं है. This is the maximum point of that you are varying R versus theta का ये graph है. ये projectile की trajectory का graph नहीं है. Okay, that's why I always say label your axes and read those labels. Okay, just because two things look like a parabola doesn't mean that they're both parabolas. Okay. T ढूंढने के बाद आप इसमें plug in करोगे और फिर आप डिफरेंशिएट करोगे इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर आप उसको इक्वल टू 0 सेट करोगे, फिर आप थीटा ढूंढोगे. ओके, हाँ जी. ओके, देयर आर स्मार्टर वेज टू डू इट. नहीं, इसको याद निकालना, असल में हमने क्या निकालना है इस प्रॉब्लम में? डी आर बाई डी थीटा निकालना है ना. नाउ इज योर टाइम टू शाइन. इतने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन वगैरह ए लेवल वगैरह में किए हुए हैं. You have R over here, U constant है. You can directly try to use this to figure out dr by d theta. इतना लंबा क्या सब्स्टिट्यूट करने बैठ गए हो? dr by d theta क्या होगा? U तो गया बैठ डेरिवेटिव के. Theta you get essentially minus sin theta times t. ये प्रोडक्ट रूल लगाओ ना. इसको डिफरेंशिएट करो, फिर इसको कांस्टेंट रखो, प्लस इसको कांस्टेंट रखो, मतलब इसको ऐसे का ऐसे रहने दो, इसको डिफरेंशिएट करो कैपिटल टी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो यू गेट प्लस cos थीटा dt by d theta. dt by d theta essentially looks at how does the time of flight change when you change theta.
और डी टी बाई डी थीटा किधर से निकालोगे? इससे। दोनों साइडों को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उसी वक्त निकल आएगा. You don't need to do lots of algebra to do this, okay? There are much smarter ways to do this. Anyway, a very important lesson over here is that whatever method you use, this is not that straightforward. The algebra is long and messy and you have to do a lot of work to get it. And there's हाँ. अगर हम ये जो पोजीशन वेक्टर वाली इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी के y कंपोनेंट को 0 पुट करता है तो इससे भी तो थीटा आ जाएगा. नहीं, उससे तो आपका आएगा वेलोसिटी वेक्टर 0 हो रहा है. इस ग्राफ को ना कंफ्यूज करो प्रोजेक्टाइल के मोशन के ग्राफ से. ये है प्रोजेक्टाइल. इधर मैं देख रहा हूं कि आर कैसे चेंज हो रहा है विद चेंजिंग थीटा. दिस इज नॉट इवन टॉकिंग अबाउट अ सिंगल प्रोजेक्टाइल. आई एम थ्रोइंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा. और मैं कह रहा हूं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा जब मैं चेंज करता जा रहा हूं आर कैसे चेंज हो रहा है. That's what this graph is telling me about. Okay? कौन सा? T? टाइम? टाइम डिपेंड करता है थीटा पे यार. जितनी देर आपका पत्थर हवा में रहेगा वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा. आप फ्लैट थ्रो करोगे तो कोई और टाइम ऑफ फ्लाइट होगा. ऊपर की तरफ करोगे तो जाहिर बात है बहुत ज्यादा देर के बाद पत्थर जाके नीचे गिरेगा. Okay? क्योंकि आप डी आर बाई डी थीटा का रहे हो. यू लुकिंग एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड आर डिपेंड्स ऑन थीटा इन विच वे. आर जो है वो यू पे डिपेंड करता है लेकिन यू तो मैं चेंज ही नहीं कर रहा. ओके? आर जो है वो इस पे कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है. सो यस दैट्स हाउ इट डिपेंड्स ऑन थीटा. बट देन आर आल्सो डिपेंड्स ऑन थीटा इन अनदर वे क्योंकि कैपिटल टी भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है. T in other words is also a function of theta. Okay? हाँ जी. नहीं. जीरो से इक्वेट करना है तो अभी आपने ढूंढना है डी टी बाई डी थीटा. इसको इस्तेमाल करके आप निकाल लो कि डी टी बाई डी थीटा क्या होगा. उसको प्लग इन करोगे उधर और फिर इक्वेट टू जीरो करोगे. हाँ जी. थीटा 0 नहीं. आपने इधर से थ्रो किया है. आप बिल्कुल फ्लैट थ्रो करते हो इस तरह करके. ये प्रोजेक्टाइल आगे जाके गिरेगा ना कुछ. ये आर होगा फिर. You are throwing different projectiles with different values of theta. आप ढूंढ रहे कौन सी वैल्यू ऑफ थीटा मैं चूज करूंगा तो मेरा प्रोजेक्टाइल सबसे आगे जाके गिरा. दैट्स व्हाट यू आर डूइंग. अगर आप बिल्कुल फ्लैट थ्रो मार रहे हो आपका गिर रहा है आगे जाके ना. बट इफ यू आर यूजिंग अ स्लाइटली बिगर वैल्यू ऑफ थीटा इससे भी ज्यादा आगे जाके गिरेगा. उससे भी ज्यादा आगे. बट अगर बहुत ज्यादा बराद हो गए वो वापस आपके सर के ऊपर ही आगे गिर जाएगा. ओके ओके. द पॉइंट बीइंग दैट दिस इज नॉट सो सिंपल. यस यस इधर से आएगा. आप सबने ए लेवल मैथमेटिक्स की हुई है. दिस शुड बी ब्रेड एंड बटर फॉर यू बट नेवर माइंड. ओके सो एनीवे द पॉइंट बीइंग कि ये अलजेब्रा इज टायरसम एंड कम्बरसम और मुश्किल है. इतना आसान नहीं है. ओके दैट इज व्हाई it pays off that you use some other method to attack the problem. जो कि क्या करेंगे? हैं? क्या सब्स्टिट्यूशन? हाँ तो क्या तो शुरू में मैं सब्स्टिट्यूट ही कर रहा था ना. तो मैं पहले कहा था कि सब्स्टिट्यूट करके फिर डिफरेंशिएट करो. लेकिन वो मसला है सब्स्टिट्यूशन का ये होगा कि आपके पास एक स्क्वायर रूट आया होगा और जब भी स्क्वायर रूट आ जाए आपकी क्वेश्चन में उसे जान छुड़ाना कोई इतना आसान काम नहीं होता. तो ये आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो मैथ्स मैंने लिखी नहीं है. इसलिए आप बड़े आराम से बैठे हो कि ये कोई सिंपल तो नहीं लग रहा. जरा करके देखो, जरा लग पता जाएगा आपको. ओके कि कितना गंद जो है पैदा होता है. लेकिन मैजिकली सारा गंद साफ भी हो जाता है आखिर में, प्रोवाइडेड यू डू एवरीथिंग प्रॉपरली. ओके
Okay, so what other approach that can we use? You do some simulations. आपके पास कंप्यूटर का दौर है, मोबाइल फोन है आपके पास, आप बाथरूम में बैठ के मोबाइल फोन पे ये कर सकते हो. Okay, तो it's very easy to actually solve this problem on a computer. ये टिपिकल CS100 का, इधर तो नहीं, इधर तो आप दूसरी वेबसाइट बना रहे होगे who cares. अच्छा, तो you have this is a typical CS100 problem that you can solve writing 10 lines of code. Takes 2 minutes if you know how to do it. Matlab, if you know the syntax roughly, you can do it within 2 minutes. Doing it by hand will probably take you 15 minutes, and probably at the end of 15 minutes you still won't be 100% sure of your answer कि शायद मैंने कोई अलजेब्रा की कोई गलती कर दी हो. Okay, so what do you do? अगर आपने रीडिंग्स जो अपलोड की हुई हैं वो पढ़ी हैं, this should be familiar to you, but anyway, the first thing that you need to do is that you go to, so of course you have to choose a language in which you will write the program. Don't do C++ for this thing, because वो needlessly complicated होगा. That will be like shooting a mosquito with a bazooka. उसकी ज़रूरत नहीं है. Just use Python. That's simple enough, okay, to write code in. Use Visual Python, that's even better, because then you can actually make movies that you can play. You don't need to install everything, you can run everything within your web browser. So the first thing that you do is to go to this website. Okay, so you go to Trinket and then you sign up, or you can sign in using a Google account, so you don't even need to make an account. Let me just sign in with my own account. Oh, okay. अब अगर इज्जत बच जाए, मैं हमेशा इसका पासवर्ड भूल जाता हूँ. Okay, so trinkets are, by the way, small snippets of code. So that's what's the meaning of trinket over here. Okay, so I'll start from a very simple problem ताकि आपको समझ आ जाए. Then we'll do the projectile from a cliff problem via code. Okay. The first problem is that I want to simulate the motion of a falling ball. Let me first just tell you कि program का output क्या है ताकि आप थोड़े से suitably impress हो जाओ. Okay, so you just play the code, and first time around it takes some time. There you go. You have a big white ball that is falling towards the ground. Yes, thank you. Okay. I literally did this. Okay. क्यों उनका काम बढ़ा रहे हो एडिटिंग का? So what this does is, of course, this program is without solving a single equation. The beauty of this is that you are making the computer solve all the equations for you. You're not writing down कि भाई the distance fallen is equal to half gt square. मैंने वो भी नहीं derive करना, वो भी कंप्यूटर ही खुद derive करे बैठ के. And the computer produces the distance time graph, the height time graph, that's the blue curve, and the speed time graph, that's the red curve. And you know, as expected, the height decreases quadratically, the speed increases linearly. Okay, now let me go through the code. Okay, let me first ये इसको छोटा कर देता हूँ और इसको zoom कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए. Okay, let me turn off the light. Okay, so line 1. You don't need to write that down. जब भी आप कोई नया प्रोग्राम शुरू करेगा वो ऑटोमेटिकली लिखी हुई आएगी. And I'll tell you how to start writing your own programs. Okay, but first of all, I think it's important that you learn how to read a program. Just like when you learn any new language, it's important to first read some simple words and then you start writing those simple words. Okay. Anyway, line 1 basically tells it that I'm writing the program in Visual Python version 3.2. That 3.2 is not important. आपके simple से programs किसी भी version में चल जाएंगे. Okay. G is equal to 10. That's of course the value of the acceleration of free fall. So G is equal to 10 in SI units. So of course I'm not writing down meter per second square. I've just explicitly said in the beginning as Hertz is SI में. Anything that follows this hash, this is a hash by the way, is a comment that is for others' readability and even more importantly your own readability. Trust me, when you're writing down some piece of code, उस वक्त तो आपके लिए हर चीज़ obvious होगी. 2 महीने बाद जब दोबारा कोड पढ़ रहे होगा आप कहोगे मैं इतना बेवकूफ़ था. ओके, तो अपनी बेवकूफ़ी को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है. सो राइट डाउन कमेंट्स. ओके,
to explain how stupid you were. Okay, so anyway, the line number 5, h is equal to 100. Now, सारा ये visual Python में the simulation is taking place in 3D space. So implicitly there's some origin of coordinates, some origin that is set up at the middle of your जो भी canvas है जिसमें simulation हो रही है. Okay, and h is essentially telling it the height, the initial height of the projectile that I've thrown, that I've just let go, जो आपने movie देखी थी. So h is equal to that. So I'm essentially releasing a projectile from a height of 100 meters. That's essentially line 5. Line 5 तक essentially मैं variables initialize कर रहा हूँ. Okay. Line 7, of course, I'm setting that I start my clock from t is equal to 0, of course. So you set up the initial value of time. Line 9, and this is where the beauty of visual Python comes in. They are essentially built-in commands that allow you to generate all kinds of shapes, all kinds of 3D shapes, boxes, as in cuboids, cubes, cylinders, cones, helices, and so on and so forth. So I'm specifying the ground, the flat ground, as a very thin box. अब कोई भी डब्बा है, आपने उसको बताना है कि डब्बा रखना किधर है और कितना लंबा और कितना चौड़ा और कितना मोटा बनाना है. That's the two things that you need to tell it. You can also tell it कि orient किस तरह करना है. आपने क्या सीधा डब्बा है या rotated डब्बा है. So basically line 9 tells it कि कोई एक डब्बा बनाओ जिसको नाम दो ground. Ground equals to box, एक डब्बा है. And the thing in the brackets after box tells it कि किस किस्म का डब्बा है. The POS is not what you are thinking. Its position, okay? Never mind. So POS जो है वो that's the position that tells it कि डब्बे को center किधर करना है. Okay, so I'm centering the ground at the origin. And then I make it a size of that size. You can play around with the numbers. Essentially, मैं पतला सा number डब्बा बना रहा हूँ. So the coordinate system that Visual Python uses by default is this. ये आपका x axis है, ये आपकी y axis है. The z axis is coming out of the page. तो मैं कह रहा हूँ okay डब्बे का x ये वाले size काफी बनाओ डब्बे का, इसको पतला बनाओ. So y coordinate का y जो value है डब्बे की बहुत छोटी होगी. Hence the point 2. और 3D ऑब्जेक्ट है तो मैंने कहा अच्छा आगे पीछे भी थोड़ा सा बना दो. So then the 40. Okay. I'm making it of color green. You don't need to put in all of these arguments by the way. अगर कोई argument color नहीं specify करोगे वो by default white बना देगा उसको. Okay. Ball, the object that you are throwing, I've chosen it to be a sphere. Choose some other shape. You can choose a box as well. It doesn't matter. I've centered the sphere above the ground. ये अगर ग्राउंड अगर इधर है, ये डब्बा यूं करके बना हुआ है, इसके ऊपर हाइट h है, तो इस बॉल का इनिशियल y कोऑर्डिनेट क्या है? That's exactly what you see. POS 0 h 0. अब अपने बॉल की क्वालिटीज बतानी है बाकी. ये आप बताता है कि बॉल इनिशियली है किधर, रेडियस उसका कितना है, कलर क्या है, मेक ट्रेल एसेंशियली टेल्स इट द पाथ फॉलोड बाय द बॉल, उसके थ्रू मैंने लाइन बनानी है या नहीं बनानी. Do I sketch out the trajectory that the ball follows or not? Then I define some initial other properties of the ball, the initial velocity of the ball. I'm throwing it from rest. So ball dot v, I've assigned a quality v to the ball. So this is an attribute of the ball. V is an attribute of the ball and that is set equal to a vector. ये आपकी सारी simulations में vectors इस्तेमाल होते हैं. You can't do these 3D simulations without using vectors, okay? अगर आप vectors का बगैर करोगे आपको सारा कोड खुद से लिखना पड़ेगा. Every single pre-built package जो software package है तो deal with actual simulation of particles, सारे vectors इस्तेमाल करते हैं, of course. Okay, so you have that the initial velocity vector is 0 and the a free, ये a free नहीं है. This is a free, this is the acceleration due to without any air resistance. That's why I put in the free. Both चल मैं कर रहा हूँगा dealing with the same motion but with air resistance. Okay, so typical exercise for you in your exam might be कि भाई ये code दिया हुआ है आपको. This does not include any effect of air resistance. Modify it roughly. because syntax का मैं कुछ ज़्यादा परवाह नहीं करूँगा but at least tell me how will you modify it if you had to take into account air resistance.
Okay, so a free is of course just a vector. Acceleration vector is pointing, is of size g and pointing downwards. Yeah. Hence the minus. हाँ, अभी अगली दफा आ रहा है, आ रहा हूँ अभी, आ रहा हूँ, हौसला, अभी क्लिफ से भी मैंने लॉन्च करना है आपको. ओके, नहीं सॉरी, आई मीन बॉल को. ओके ओके, सो dt equals 0.001. you'll see what this means. This is essentially the step size. कि प्रोग्राम कैलकुलेट करके t is equal to 0 पे क्या हो रहा है, t is equal to 0.001 पे क्या हो रहा है, t is equal to 0.002 पे क्या हो रहा है, 0.003 पे क्या हो रहा है, and so on and so forth. Okay? अभी तक मैं कुछ भी नहीं किया, अभी तक मैं सिर्फ इनिशियलाइज कर रहा हूं, इसलिए अभी तक कोड ना गिनो कि कितने लाइनों का हुआ है, ये सब ट्रिवियल है. ओके, F1 is essentially telling it कि भाई ग्राफ पेपर एक लो, उसके ऊपर एक कर्व बनाओ ऑफ कलर ब्लू. अब किन पॉइंट्स के थ्रू कर्व बनाना है वो भी मैंने स्पेसिफाई करनी है, वो बाद में करेंगे, जब हमारे पास पॉइंट्स, जब हम कैलकुलेट करेंगे तभी स्पेसिफाई कर सकता हूं ना. देन मेक अनदर कर्व ऑफ कलर रेड. ओके, सो दैट मच इज डन. अब आपका आता है मेन जी प्रोग्राम. इतना सा प्रोग्राम है आपका. एक्चुअली इसमें भी छोटा कर सकते हो. ये मैंने एक्चुअली लिखा हुआ है बिकॉज दीज टू लाइंस यू कैन चेंज व्हेन इट कम्स टू ए रेजिस्टेंस. ये एक्चुअली आप इस प्रोग्राम से रिमूव कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू यूज के भाई एक्सलेरेशन वेक्टर जो है वो 0 - g 0 है, वो ऊपर आपका डिफाइंड है. ओके, अच्छा, एनीवे द मेन पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम इज लाइन 27 एंड लाइन 28. That's really the only two lines you really need to understand in this program. आपका सारे का सारा प्रोग्राम एक्चुअली ये दो लाइंस है. Okay, so I need to explain कि line 27, line 28 में हो क्या रहा है. आप सारे CS वाले हो. This is probably one of the more, well, this is for sure one of the most important algorithms that you'll ever see. क्या नाम है इसका? Euler algorithm. Thank you. Okay. OILER नहीं है Euler, EULER है Euler. Okay. So, okay. So here's how it works. Watch closely. It goes back to the definition of acceleration. It's very, very simple. आपके पास एक्सप्रेशन है, ऑफ कोर्स ये इधर मैं एक पर्टिकुलर केस पे अप्लाई कर रहा हूं ये एल्गोरिथम. एक्सप्रेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द वेलोसिटी? दिस टेल्स मी दैट आई कैन कैलकुलेट द चेंज इन द वेलोसिटी वेक्टर. If I know the acceleration vector, I can work out the change in the acceleration vector, provided that the change in time is small, not zero. Zero होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं हुआ. Okay, so if I have some initial time 0 to some time t, इसको मैं चॉप अप करता हूँ छोटे स्लाइसेस में और मैं कहता हूँ ये टाइम t1, इधर टाइम t1 है. टाइम t1 पे मैं वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालूंगा? Provided I know the velocity vector at time 0. The problem for you is find out the velocity vector at time t1 given that you know the velocity vector at time 0. अच्छा, लाइट ऑन कर देता हूँ क्या? तो पहले बता देता हूँ क्या. Let me turn it on. अब ठीक है? अब ठीक है? Okay. So, given that you know the velocity vector over here, the problem is to figure out the velocity vector over here. Forget about के बाकी क्या है, पहले इधर तो figure out कर लें. कैसे करोगे? If you know the acceleration vector over here, you can use the acceleration vector to figure out the change in the velocity vector. You add the change to the initial vector to get the new vector. So, velocity vector at time t1 equals the velocity vector at time 0 plus the acceleration vector at time 0 multiplied by delta t. Where delta t को dt को मैंने delta t लिख दिया, okay, because it is finite. Okay. This is the change in the velocity vector. This is the initial velocity vector. This is the new velocity vector. You know this. You know this. You know this, of course. Okay. अब मेरा इधर वेलोसिटी वेक्टर आ गया. अब मैं टाइम, ये अगला टाइम जो टाइम t2 है, इस पे मैंने वेलोसिटी वेक्टर निकालना. हाउ डू आई फिगर दैट आउट?
You essentially use कि भाई VT1 plus acceleration at time T1 multiplied by delta T. Do it step by step, बार बार repeat करते रहो. Once you have the velocity vector over here, how do I figure out the velocity vector over here? Velocity vector over here plus the acceleration vector over here times delta T. Once I have this, how do I figure out this? Velocity vector over here plus the acceleration vector over here times delta T. The acceleration vector multiplied by delta T always gives you the change in the velocity vector. You add that change to the initial velocity vector for the time interval, you get the velocity vector at the end of the time interval. That's all it is, okay? हाँ. नहीं, ज़रूरी नहीं. It can be changing. तो ये acceleration निकालने का तरीका, लेकिन आपको what you are assuming कि आपको ये तरीका पता है कि acceleration कैसे निकालनी है at different times. So you know acceleration as a function of time. Okay, either the uniform of course, but the beauty of the method is that it applies even to non-uniform acceleration. Okay, so that's what I'm doing over here. अगर आपने थोड़ी बहुत भी CS की है, loop तो कर लिए होंगे थोड़े बहुत. अच्छा, never mind अगर नहीं भी किया, it's fine, okay. बहुत complicated loop है जैसे, okay. So this the line 23 says कि keep on repeating these statements as long as this condition is true. ये condition क्या बता रहा है? This is just saying कि ball की position का y coordinate, that's what ball.pos.y means, is bigger than 0. What does that physically mean? That the ball is above the ground. As long as the ball remains above the ground, keep on calculating the motion of the ball, because once it hits the ground, we know कि assuming कि inelastic collision बिल्कुल होता है, ball आके चिपक जाता है ground के साथ. Okay, so keep on calculating the motion of the ball as long as the ball is above the ground. Rate ये क्या बता रहा है? Rate 1000. Essentially is telling it कि calculation कितनी तेजी से करो. अगर ये आप लाइन नहीं करोगे, वो कंप्यूटर्स आज के इतने तेज है, इवन आपके मोबाइल फोन इतने तेज है, सारा प्रोग्राम उसी वक्त रन करके बैठा होगा, आपको वो मूवी नजर ही नहीं आनी. आपने ये एसेंशियली प्रोग्राम को आर्टिफिशियली स्लो डाउन किया हुआ, काइंड ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड सेट कर रहे हो कि इतने फ्रेम्स पर सेकंड जनरेट करो भाई, बड़ी तेजी से ना मूवी चला दो, मुझे समझ नहीं आया क्या किया. एसेंशियली आप इसके बगैर रन करोगे तो आपका यूट्यूब में फैक्टर लग गया 1000 टाइम्स का, तो उसी वक्त बॉल नीचे गिर के बैठा हुआ है, आपको मूवी नहीं नजर आई. ओके, दिस जस्ट स्पेसिफाइज एसेंशियली एक्सेलेरेशन वेक्टर है क्या. ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू पुट इन दिस लाइन, वो ऊपर ही स्पेसिफाई हुआ है. लेकिन when you are dealing with air resistance, then you have to calculate the acceleration vector again and again and again, because the acceleration vector depends on the speed of the object. Okay, इसलिए मैंने already इधर लिख दिया, because then the generalization becomes very straightforward. Okay, ये आपकी line 27, line 28 क्या कर रही है? New velocity of the ball equals the old velocity of the ball plus the change. Change equals the acceleration vector times the change in time. That's all I'm doing. Once you have the velocity vector, you can use the velocity vector in exactly the same way to update the position vector, because v is equal to dr by det. Mathematically तो exactly वही equation है. The new position vector equals the old position vector plus the change in the position vector. What's the change in the position vector? The velocity vector times the change in time. उसके बाद आप कह रहे हो कि अच्छा जो भी पोजीशन वेक्टर है और जो भी वेलोसिटी वेक्टर है उसको प्लॉट कर दो. प्लॉट, पुट ऑन द ग्राफ पेपर एज x कोऑर्डिनेट t, y कोऑर्डिनेट द पोजीशन कंपोनेंट, द y कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉल. ये आपका ब्लू कर्व बनेगा. क्यों ब्लू कर्व बनेगा? क्योंकि f1 है. ये f1 आपने ऊपर कलर ब्लू किया हुआ है, ये g कर्व कलर ब्लू. This plots the value of time with the speed of the ball, the y component of the velocity vector, लेकिन वो y component negative आएगा क्योंकि बॉल नीचे गिर रहा है. I'm just interested in the speed of the ball, so I'm looking at the absolute value. I don't care about the sign. इसलिए मैंने इधर ABS लगा दिया, absolute value. Okay? हाँ. Oh yeah, I know. वो मैंने ऑलरेडी बताया है. ये इसलिए क्योंकि बाद में जब मैं एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड करूंगा तो फिर मुझे लूप के अंदर इंक्लूड करना होगा. इस प्रोग्राम के लिए आपको जरूरी नहीं है, इस प्रोग्राम के लिए आप मैंने ऊपर ऑलरेडी किया होगा. सो इस प्रोग्राम में काइंड ऑफ रिडंडेंट है.
ओके लेकिन अगेन जब भी आप इस किस्म का स्टूपिड प्रोग्राम लिखो, इट्स अ फीचर नॉट अ बग, ओके। एनीवे सो यू हैव, सो आखिर में ये लाइन ना भूलना, बिकॉज द प्रोग्राम ऑल्सो ऑफ कोर्स हैज टू गो टू द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट आइट्रेशन, उसके अगले टाइम स्टेप भी तो करना है। 0 से टाइम t1 पे तो कैलकुलेट करना ही लेना है, फिर टाइम t1 से टाइम t2 जाना है, टाइम t2 से टाइम t3 जाना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ लेट्स सी कि भाई इसमें आप जो है एयर रेजिस्टेंस कैसे करोगे इंक्लूड। लो जी एयर रेजिस्टेंस आ गई है, लेट मी जस्ट देख, ओके अभी भी मेरा जो है वो ओके आजा भाई पूरे का पूरा, ओके नेवर माइंड। सो अगेन यू हैव g इज इक्वल टू 10, ये बंद करने दो, then you can see more clearly. Okay, so you have g is equal to 10, h is equal to 100, exactly the same as before. k prime एक नई चीज है, k prime essentially tells you कि कितनी air resistance है. The bigger the value of k prime, the bigger the effect of k resistance, as you'll see very soon. Okay, so k prime right now is a constant, you can set it to any non-negative number. बाकी ये वही चीज़ें हैं, ये भी वही चीज़ है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 0 है बॉल का, एक्सलेरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जैक्टली वही है जो पहले है, ए फ्री, ये टोटल एक्सलेरेशन नहीं है, इसमें भी एयर रेजिस्टेंस मैंने इंक्लूड करनी है। ओके अगेन टाइम स्टेप इज दैट f1 f2 यही है, अभी तक वही चल रही है। ओके लेट मी चेंज दिस टू 1000 ताकि कोई जल्दी से मूवी प्ले हो। ओके ओके सो नाउ द ओनली चेंज इज कि अब आपका एक्सलेरेशन वेक्टर इज नॉट सिंपली इक्वल टू -g ey with air resistance, assuming that the drag force is proportional to the speed squared of the object. So here I am assuming that the drag force is proportional to the square of the speed. एक फोर्स नीचे है वेट, एक फोर्स ऊपर है, तो टोटल एक्सलेरेशन क्या होगी? एक नीचे की तरफ एक्सलेरेशन होगी g, एक ऊपर की तरफ होगी। द टोटल एक्सलेरेशन विल सम ऑफ दीज। The size of this arrow is proportional to the speed squared of the object. जो proportionality constant है इधर, that is k prime, जिसको मैंने k prime कहा हुआ है। k prime of course depends on the shape of the object. It depends on the density of the object. It depends on essentially on the properties of the object. It also depends on the properties of the air through which the object is falling. Okay. अगर एक फैला हुआ ऑब्जेक्ट है ऑफ बिग क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑफ कोर्स k प्राइम विल बी बिगर। ओके एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर। मैं a की वैल्यू निकाल रहा हूं, नीचे की तरफ g है -g प्लस ये ऊपर की तरफ जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्सलेरेशन है k प्राइम मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर। लेकिन v रिमेंबर मेरा वेक्टर है, तो उसका मैं कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करके उसको स्क्वायर कर रहा हूं। हाँ क्योंकि वेक्टर है ना, इट्स जस्ट फॉलिंग वर्टिकली। अभी क्लिफ से चेक करेंगे तो दोनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ओके इट्स जस्ट फॉलिंग वर्टिकली। सो देयर यू गो, एक्सलेरेशन वेक्टर नाउ इज 0 a 0 a ये है। सो इफ यू वांट ये आप डायरेक्टली इधर ही भी डाल सकते थे। ओके सो द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज एग्जैक्टली द सेम एज बिफोर। एक दफा आपके पास एक्सलेरेशन वेक्टर आ गया, यूज दैट टू अपडेट द, क्या अपडेट करोगे एक्सलेरेशन वेक्टर से? velocity vector. Once you have the velocity vector, use that to update the, notice कि आपने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया इधर, यू आर मेकिंग द प्रोग्राम डू एवरीथिंग। आपने सिर्फ जो फिजिक्स गई है इधर इज जस्ट गोइंग इनटू द डेफिनेशंस ऑफ द एक्सलेरेशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर, एंड यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द डायरेक्शंस। अगर इधर एक वेट नीचे की तरफ है, ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ है, हेंस द ऑपोजिट साइंस ओवर हियर। g comes along with a negative sign, this thing comes along with a positive sign because the drag force is opposite to its downward motion. अच्छा अब इसको चला के तो दिखाऊं मैं, अब क्या एक्सपेक्ट करते हो? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? What will be the speed time graph of this object look like? शुरू तो 0 से ही होगा, speed time. So it will increase. Initially, initially the slope of this graph will be
कितने के बराबर होगी? जी, बिकॉज द इनिशियल एक्सलेरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट शुड जस्ट बी जी. अभी तो ड्रैग फोर्स लगी ही नहीं है, अभी तो मूव ही नहीं करना शुरू हुआ वो. So initially it's like that, and then it flattens out, and then of course basically is practically flat. That's what you expect. Corresponding position time graph क्या होगा? So initially quadratically increase करेगी position because initially जो है वो basically weight ही लग रहा है उसके ऊपर. Under the influence of weight, the position increases as half gt square. But then very soon the speed becomes constant. और फिर पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन. सो दिस मर्जेस इनटू स्ट्रेट लाइन एसेंशियली. दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट. अब देखते हैं हमारी सिमुलेशन क्या बना देती है. ओके, ये देखो, there you go, the speed time graph. वो ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा उल्टा बना दिया था बिकॉज मेरे दिमाग में भूल गया कि मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम नीचे रखा हुआ है. So of course this decreases quadratically and then it becomes a straight line. There you go, that's what you see. Okay. और you don't even need to, you can now calculate कि कितने टाइम में वो गिरेगा. Okay, so you have this. Okay, so again I'll share these programs with you. ये already readings में कुछ हद तक मैंने describe किए भी हुए हैं. If you want to write your program, जो भी शेयर किया होगा प्रोग्राम उसमें आप एडिट नहीं कर सकोगे. The reason simply being that if 450 people edit the same program, उसके अगले दिन मुझे पता नहीं क्या मिलेगा मुझे. So of course I'm not allowing you to edit the program. You essentially have to, you can copy the program. So you can copy the code and paste it into your own program. How do you make a program? Once you sign in, आपका इधर username आएगा, you go to new trinket. You go to a new program, choose web visual Python because that's in what I've used to write down the program. और फिर इस पे करके then you click on Python and then you can write down the program. इधर लेफ्ट पेन में जो है प्रोग्राम आप लिखोगे, उसको क्लिक करोगे प्ले के ऊपर, you'll get the results over here. कांस्टेंट नहीं है ना. ओ कोड के अंदर, कोड के अंदर ये दो नंबर है ना, कंपटीशन चल रहा है. जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ये वाली टाइम इंक्रीज होती जाती है. इवेंचुअली ए पॉइंट कम्स जहां एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है. जब एक्सेलरेशन जीरो होती है तो अगली वेलोसिटी क्या होगी? वो चेंज नहीं होगी, तो फिर वो हमेशा जीरो रहेगी एक्सेलरेशन. ओके, देखो किसी ने सोचा था ओके इसके बारे में, बाकी सब बस वो ना. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ओके, अगेन ये मैं कोड शेयर करूंगा. जो है क्लिफ ऑफ हाइट h, इसको 100 ही मैं कर देता हूँ. Okay. Once again, so this is without air resistance. A good exercise would be कि इसको modify करो कि air resistance भी है साथ. फिर क्या करोगे? So you have now the acceleration vector. Of course ये 0 minus g है, 0 है. Oh my God, मैंने इधर minus g को जो -10 लिख दिया. Okay, never mind. Make the cliff. Okay, so you make the cliff. The cliff is modeled as a डब्बा. उसको मैंने देखो जैसा घास भी लगा दिया, शायद उसको ग्रीन कलर का बना दिया. ग्राउंड पे भी मैंने घास लगा दिया. ग्राउंड ऑफ कोर्स इज एट द बेस ऑफ द क्लिफ, अनदर बॉक्स. बट ऑफ कोर्स दीज बॉक्सेस हैव डिफरेंट सेंटर्स. ये लेफ्ट पे शिफ्टेड है, ये ओरिजिन के आसपास है. ओके, अगेन जो है वो स्फीयर. इधर सिर्फ फर्क ये है कि आपका स्फीयर की आपने स्पीड बतानी, इनिशियल स्पीड. आपने उसका एंगल बताना है जिस एंगल से आप शूट कर रहे हो. हियर आई एम शूटिंग एट एन एंगल ऑफ 2 डिग्रीज, लेट्स मेक इट 20 डिग्रीज. आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बॉल का ये बन गया. ये आपका बॉल डॉट वी नॉट बेसिकली यू है. दिस इज यू, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा. ये क्या है? ये सारी चीज, ये यूनिट वेक्टर है जो बता रहा है किस डायरेक्शन में शूट किया है. ये t equals 0, दैट्स द इनिशियल टाइम. ये तो वही पिछले वाला ही है. नाउ अगेन यू डू इट अगेन ओवर एंड ओवर अगेन. अब बॉल की वेलोसिटी अपडेट करते जाओ, बॉल की पोजीशन अपडेट करते जाओ. इफ द बॉल इज ऑन द ग्राउंड, स्टॉप द प्रोग्राम. ब्रेक ये करता है एंड देन अपडेट द टाइम. ओके, बेसिकली द सेम प्रोग्राम एज द प्रीवियस प्रोग्राम. अगर आप वेक्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हो, the only thing is कि वेक्टर के अब दो नॉन जीरो चीजें हैं. इफ यू नाउ रन दिस प्रोग्राम, इधर गया,
No. There you go. It goes and hits it. Seriously. And importantly देखो आपने roughly 3 या 4 lines of code के साथ वो ऊपर वाला ना गिनो again, वो basically वो standard ही है. You don't need to think about writing that. You can just copy paste all that whenever you're doing any such program. It immediately allows you to calculate the horizontal distance. ये कह रहा है प्रोग्राम ने कैलकुलेट खुद ही कर दिया है कि भाई this distance from the base of the cliff to the point of impact is 70.67. You change the angle और ये आपको कोई और आएगा रिजल्ट. So if you change this angle, ये remember आपका सारे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंगल्स रेडियंस में लेते हैं. So make sure you convert angles to radians. अगर एंगल में 0 लूँ, you get a non-zero. देखो अब non-zero r की वैल्यू आएगी. ये देखो कितनी आ रहा है, 67.08. मैं अब एडिट करता हूं कोड, तो अब मैं करता हूं अगर 45 एंगल, फिर कितना आता है? इफ आई डू इट 45 डिग्रीज, वो देखो 45 से ऊपर गए हैं. एंड नाउ इट्स 60. 0 डिग्री पे बल्कि ज्यादा आया था, 45 डिग्री पे बल्कि कम आया. दी ऑप्टिमल एंगल, और ये शुरू में जाके आपने अब शो करना है जहां से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था. गो बैक होम, वो जो मैंने कहा था डेरिवेटिव वगैरह लोगे ये वो, शो द फॉलोइंग. होमवर्क फॉर यू, दैट द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ थीटा इज द फॉलोइंग: टेंजेंट इनवर्स ऑफ u डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh. That's the optimal value of theta. And that value you can show that is completely consistent जो वैल्यू आपकी प्रोग्राम के लिए के मुताबिक ऑप्टिमल होती है. So you can check this. अगर h 0 है, क्या आंसर आ रहा है आपका? If h is 0, you are getting u divided by u, which is 1. और टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है? 45 degrees. If h is very large, ये डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया, then you essentially calculate tangent inverse of 0. As h becomes bigger and bigger, you basically make a flat throw.